तो देखिए, जब भी हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला सवाल विद्यार्थी पूछता है कि भाई कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, क्या क्या प्रारंभिक परीक्षा में आएगा, नहीं आएगा। बिकॉज देर आर 37 चैप्टर, 37 अध्याय हैं जिसमें 484 सेक्शन हैं, और यदि हम अमेंडमेंट को भी जोड़ दें तो बहुत सारे सेक्शन हो जाएंगे, तकरीबन 500 से ज्यादा ना। यहां मेरी जिम्मेदारी एक, मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि जिनके पास हमारा ये बेयर एक्ट है सीआरपीसी का, वो बेयर एक्ट के पिछले भाग में जाएं, सबसे पीछे। ये तकरीबन पेज संख्या 526 है। 526 से, दिस इज पेज नंबर 526 वेयर दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आर रिटन. I will just tell you and you will keep marking these sections, which is very, very important for your examination. कुछ भाग में there are certain parts where the whole chapter is important, but there are certain chapters where some specific sections are important. So I'll be telling you that and you will be jotting down or marking that. जिनके पास एम्बिशन पब्लिकेशन का बैरेक्ट है वो मार्क कर ले पिछले भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेक्शन 2। सेक्शन 2 में लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लगभग, कुछ चीजों को छोड़ दें तो लगभग सब इंपॉर्टेंट है। 2B, 2C, 2D, 2G, 2H, 2R, 2W, 2S, 2WA, 2X, इन पे सवाल आया हुआ है। 2L सवाल आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, सवाल इन चीजों पे आया हुआ है। इज दिस क्लियर? नाउ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस में मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिखता है, बट देन आई विल टेल यू सेक्शन 24, 25, 25 में आप एक बार देख लीजिएगा। सेक्शन 8 देख लीजिएगा। चैप्टर 3 में सेक्शन 29, 30, 31, 29, 30, 31. Chapter 5, I will recommend that you read whole chapters, but I will mark certain sections like, कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है? 41A, 41B, 41, 41, 41A, 41B, 42, 43, 44, 46, 50, 53, 53A, 54, 54A, 55, 57, 60A. Questions have been asked on these sections. इन सभी धाराओं पर सवाल आ चुका है। Chapter 6, process to compel appearance. Process to compel appearance. 70, 82, 83, 88, 89. Chapter 7, process to compel the production of things. जहां आप चीजों की मांग करते हैं न्यायालय में। 91, 93, 94, 95, 91, 93, 94, 95, 96, यानी आप समझे तो 92 छोड़ करके सब इंपॉर्टेंट है। लेटर एंड टेलीग्राम्स वाला छोड़ दिया हमने। 97, 98 से सवाल आए हैं कई बार। 100 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। 99 भी छोड़ा हमने, बहुत सवाल आए हैं। 97 से तो बहुत बार सवाल आया। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस में आपको प्रोसीजर नहीं पढ़ना है, बट जनरली आई विल रिकमेंड यू रीड 106 to 110. इसमें भी यू आर रिक्वायर्ड टू रीड लिमिटेशन, कितनी अवधि है, कौन अधिकारी है, किस केस में होता है। आई हैव प्रिपेयर्ड ए चार्ट, इट इज गिवन इन योर बेयर एक्ट ऑल्सो, जस्ट सी दैट चार्ट। चैप्टर 9, मेंटेनेंस, 125 and 127. Chapter 10, 129, 133, 144, 145,
That's all. Then chapter 12. Chapter 12, the entire chapter is very, very important. जब मैंने कहा very, very important, to mark it carefully. But I tell you, more significantly, 154, 155, 156, 157, 160, 61, 63, 163, 164, 164 a medical examination of rape victim. Search by police officer 165, 166 and 66 A and B. Questions have been asked on this also. 167, 172, 173, 174, 176. So I have left some sections in between. Chapter 13, that is jurisdiction. 177, 178, 179, 181, 182, 183, then chapter 14, cognizance, 190, 93, 195, 195, 197, 198, 199. Chapter 15 has hardly 3 sections. Complaint procedure, when you file the complaint before the magistrate. 200, 202, 203. Only I have left what 201. 200, 203, 202 सब important है. 204, next chapter, chapter 16. 204, 205, personal attendance excused in that case. 206, special summons. 207, supply of copies. 209, commitment of case. Committal proceeding you must have heard. Higher judges do not commit the case, do not take cognizance. It is by lower magistrate, and then the case is committed to the higher judge. Then framing of charges, chapter 12 or chapter 17, sorry. Chapter 17, framing of charges. Chapter 17, framing of charges. 211, contents of charge. 215, effects of error. 216, alteration of charge. 217, recall of witness. 218, separate charge. 221, 223, 24. Then chapter 18, sessions trial. 227, 228. Then chapter 19, complaint to magistrate. 238, 39, 40. 38, 39, 40. 49, 50, 249 and 250.
Then summons cases, trial of summons cases, 256, 257. 256, 257. Then summary trial, chapter 21. 260, 61. Then 264. Now, plea bargaining chapter 21 is very, very important these days. 265 B, C, D. Then evidences. Obviously, when you will try the case, then evidences will be required there. So 273, 281, 285 commissions. 291 a identification report. 292, 299. Then chapter 24, general provision as to inquiries and trial. General provision as to inquiries and trial. What general provisions will apply there? So double GOFRD section 300. Legal aid 304. Pardoning of accomplice 306. 307. Power of pardon. 313 examination of accused. 311 court witness. 315 accused competent witness. 319 adding of other accused. 320 compounding of offences. 321 321 withdrawal from prosecution. 323 here is also committal. Then chapter 27 judgment. 353, 354. 57A victim compensation new provision. 362 court not to alter judgment. 366 confirmation of death sentence. Then chapter 29 appeals. No appeal 372. Appeal from conviction 374. No appeal in petty cases 376. Then appeal in acquittal 378. Chapter 30 reference 395. 395 revision by session court 397. Revision by High Court 401. Then transfer of cases 406, 407, 408. Supreme Court, High Court, Session Court. This is in hierarchy. Supreme Court first, High Court second, Session Court third.
Then this chapter 32, postponement of capital sentence on pregnant women, 416. Then bail, chapter 33, 436, 36A, 37, 38, 39. 436 till 39, 439. Irregular proceeding, chapter 35, 460 and 61. Even 463 and 465. Limitation on taking cognizance, chapter 36. That is limitation, chapter 36, 467 to 73. Now in this case, you have 468, 470, 472. 468, 470, 472. It is based on previous year question papers basically. We'll be reading little bit more, but just note down this. Then chapter 37 miscellaneous, 474, 479, 482. So these are, according to me, important provisions for preliminary examination of CRPC. And if you read all these sections and related provisions, I think that preliminary should not be an issue at all.